रुकिए, ठहरिए। इन दृश्यों को देखने के बाद मैंने खुद से सवाल पूछना शुरू किया। क्या ईवी मेरे लिए सही है? क्या ईवी सुरक्षित है? ये सवाल तो आपके भी मन में आया होगा। इसके अलावा और भी काफी प्रश्न मन में उठे हैं ईवी के बारे में। रेंज कितनी है? चार्ज होने में कितना समय लगता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत कितनी है? बैटरी कितने समय तक चलेगी? मौसम रेंज को कैसे प्रभावित करता है? क्या ईवी वाकई पर्यावरण के लिए बेहतर है? पता लगाने के लिए मैंने अलग अलग ईवी ग्रुप्स में पूछताछ शुरू की। बहुत सारे अलग अलग विचार होने के कारण मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। इतने सारे आर्टिकल पढ़ना बहुत समय लग रहा था। तब सोचा YouTube में वीडियोस देखूं, शायद कुछ मदद मिले। इतने सारे YouTube वीडियोस देख के सर चकराने लगा। करे तो क्या करे, कंफ्यूजन बढ़ने लगा। ये तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया। तब सोचा क्यों ना चैट जीपीटी से पूछा जाए, लेकिन वो भी इस तरह से जवाब दे रहा था कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन बोरिंग लगने लगा। तब मन में ये ख्याल आया, क्यों ना इंटरव्यू ले चैट जीपीटी का, पॉडकास्ट स्टाइल। What happens when you sit down for a conversation with an AI that knows almost everything? Today, we are finding out. Picture this: a podcast studio, a microphone, and a guest that never gets tired, never runs of ideas, and has read more than any human ever has. Welcome to my interview with ChatGPT. Today's guest doesn't need coffee, doesn't need bathroom breaks, and definitely won't ghost me for an interview. Let's talk to ChatGPT. AI ChatGPT. Hey again. Alright, fresh start it is. We'll jump right back into that interview mode and you can fire away whenever you're ready. For the benefit of our audience in India, we'll keep switching between English and Hindi. Hope you're ready for the challenge to switch in between these two languages. Absolutely. हम all separate. हम आराम से English और हिंदी के बीच switch करते रहेंगे. So let's dive in and keep it bilingual and fun for everyone listening in India. Let's be honest. Are electric vehicles actually practical for middle-class Indian families, or is it just a trend for the rich? Yeah, let's be totally honest. देखिए, अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो सच में मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज के लिए भी काफी प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं. It's not just a luxury trend anymore. Prices are becoming a bit more affordable, options are increasing, और charging की सुविधाएं भी बेहतर हो रही है. So yeah, it's definitely becoming a practical choice for more and more families. The biggest fear Indian buyers have is the range anxiety. If I live in Mumbai and want to go towards Satara, will I be stranded on highway or will I be able to reach? Yeah, that's a really valid concern. और हर कोई यही सोचता है कि कहीं हाईवे पर गाड़ी बीच में तो नहीं रुक जाएगी. Well, honestly, modern EVs have come a long way. आजकल की जो गाड़ियां आ रही हैं, उनकी रेंज इतनी अच्छी है कि मुंबई से सतारा तक आराम से भी बन सकता है और बीच में चार्जिंग पॉइंट्स भी बढ़ रहा है. So that range anxiety is definitely getting a lot less scary than it used to be. Everyone talks about home charging, but 75 to 80% live in apartments. How do you charge an EV if you don't have your own parking with a charging point? Yeah, that's a biggie and it's a super relevant question for a lot of people. देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं और हर किसी के पास अपना चार्जिंग पॉइंट नहीं होता. So what's happening now is कि धीरे धीरे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स भी कम्युनल चार्जिंग स्टेशंस लगाने लगे या लोकल चार्जिंग नेटवर्क बढ़ रहा है. Basically, public charging infrastructure is expanding, so even if you don't have your own dedicated spot, you can still find a way to charge up nearby. It's not perfect everywhere yet, but it's getting there. What about the 15 ampere plug option? Yeah, absolutely. और यही एक अच्छा आसान सा ऑप्शन है कि आप सिंपल 15 एम्पीयर प्लग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. A lot of EVs are actually designed so that if you have a regular 15 amp plug point, you can slow charge the car overnight. तो अगर आपके पास डेडिकेटेड चार्जिंग पॉइंट नहीं भी है, तो भी आप एक नॉर्मल सा 15 एम्प का सॉकेट यूज करके गाड़ी चार्ज कर सकते हैं. It's slower, but it definitely works, and it's a good backup option. India has extreme weather conditions, right, from ranging from 30 degrees to 50 degrees. And there is also this concept of heavy monsoon showers. How does this affect EV battery life and performance? Yeah, India's weather is definitely a bit of a roller coaster. और ये जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं 30 से 50 डिग्री तक और ऊपर से भारी बारिश भी, ये सब ईवी की बैटरी पर कुछ असर डाल सकते हैं. But the good news is कि जो मॉडर्न ईवी बैटरीज हैं वो काफी हद तक इन चीजों के लिए डिजाइन की गई हैं. They have thermal management systems to handle high heat and their seals well enough to deal with monsoons. थोड़ा असर हो सकता है, जैसे अगर बहुत गर्मी हो तो रेंज थोड़ी कम हो सकती है, पर ओवरऑल परफॉर्मेंस इतनी प्रभावित नहीं होती कि आप उसे यूज ना कर पाए. So yeah, they're built to handle it pretty well. Let's talk about the service network.
Traditional cars have service centers in every small town. What happens when my EV breaks down, let's say in Nasik or in Coimbatore? Yeah, that's a really practical point because, traditional cars do have that comfort of a service center almost everywhere. देखिए EVs के साथ अभी सर्विस नेटवर्क धीरे धीरे बढ़ रहा है. मेजर सिटीज और काफी बड़े टाउन्स में अब काफी ब्रांड्स के सर्विस सेंटर खुल रहे हैं. So even if you're in a place like Nasik or Coimbatore, it's getting easier to find help. Plus बहुत सारे EV सर्विस प्रोवाइडर अब मोबाइल सर्विस भी देते हैं, यानी वो आपके पास आकर भी कुछ बेसिक रिपेयर कर सकते हैं. So while it's not as widespread as traditional cars yet, it's definitely improving pretty fast and you're not going to be completely stranded. What about the service that is provided for the Indian brands? Many a times there are a lot of complaints. How do we deal with that? Yeah, that's definitely something people talk about. देखिए इंडियन ब्रांड्स में कभी-कभी सर्विस को लेकर थोड़ी शिकायतें आती हैं और ये एक जेन्युइन कंसर्न है. But the good thing is कि अब जैसे-जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है, वैसे-वैसे ब्रांड्स अपनी सर्विस को भी इंप्रूव करने पर ध्यान दे रहे हैं. So it's a bit of a transition period. आप अगर अच्छी तरह से एस्टैब्लिश ब्रांड चुनते हैं या थोड़ा रिसर्च करते हैं तो आपको बेहतर सर्विस मिल सकती है. It's really about choosing a brand that has a decent reputation and is known for actually improving their network. Over time, it's only going to get better as they compete more. The big investment. Now let's talk about money. A Tata Nexon petrol costs 8 lakhs, but the EV version is about 15 lakhs. That's almost double. How do you justify it? Yeah, money is always a big factor, right? और यही सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब एक पेट्रोल वाली टाटा नेक्सॉन 8 लाख की है और ईवी वर्जन 15 लाख का है, तो ये डबल खर्च कैसे जस्टिफाई करें? Well, the way to look at it is कि upfront cost ज्यादा है, लेकिन over time आपकी running cost काफी कम हो जाती है. Electricity is cheaper than petrol, maintenance costs are lower because there are fewer moving parts, और कई राज्यों में subsidies और tax benefits भी मिल जाते हैं. So basically, हाँ, upfront आप ज्यादा दे रहे हैं, but over the years you kind of make up that difference with lower running costs. Plus the environmental benefit and the smoother drive experience. So it's really an investment that pays off over time. Let's talk about the running cost. Break down the actual running cost for me. Let's say I drive 1000 kilometers per month and the petrol cost is about 110 per liter, while the per unit electricity cost is 6 to 8 rupees. How much will I save monthly with an EV versus a petrol? Yeah, absolutely. Let's break it down. तो अगर आप 1000 किलोमीटर महीना चलाते हैं और पेट्रोल का खर्च करीब 110 रुपए लीटर है, तो पेट्रोल कार में आप काफी खर्चा कर रहे हैं. Suppose your petrol car gives you, let's say, 15 kilometers per liter. That means for 1,000 kilometers you need about 66 to 7 liters of petrol, which at 110 rupees a liter is roughly around 7,000 to 7,500 rupees a month on fuel. Now if you switch to an EV और बिजली का खर्च 6 से 8 रुपए यूनिट है, तो एक EV आमतौर पर करीब 1 यूनिट में 6 से 7 किलोमीटर चल जाती है. So for 1,000 kilometers, you might use around 150 to 170 units of electricity. Even if we take the higher tide, 170 units at 8 rupees is about 1,300 to 1,400 rupees a month. So instead of spending around 7,000 plus on petrol, you're spending maybe around 1,400 on electricity. मतलब आप महीने के हिसाब से 5,000 से 6,000 रुपए आराम से बचा सकते हैं. Over time, that definitely adds up to a lot of savings. Now everybody is concerned about the battery replacement cost. After 5 to 8 years, we'll have to pay 5 to 6 lakhs for a new battery? Yeah, that's a really common concern and it totally makes sense. लोग सोचते हैं कि 5 से 8 साल बाद बैटरी बदलने पर 5 से 6 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो क्या फायदा? But the good news is कि बैटरी टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो रही है और उसकी कीमत भी धीरे धीरे कम होती जा रही है. So by the time you actually need a replacement, it might be a lot cheaper than it is today. Plus, manufacturers are offering longer warranties. कई बार 8 साल या उससे भी ज्यादा की वारंटी मिलती है. So you might not have to pay out of pocket at all if it fails early. And even if you do, costs are expected to come down significantly. तो हाँ, अभी के हिसाब से महंगा लगता है, लेकिन आगे चलकर ये उतना बड़ा खर्च नहीं रहेगा और ओवरऑल बचत फिर भी बनी रहती है. Let's talk about the resale value mystery. Used car market is huge in India. Will I be able to sell my EV after 5 years or will it be worthless? Yeah, absolutely. That's a big question. इंडिया में जो used car market है वो बहुत बड़ा है और लोग यही सोचते हैं कि 5 साल बाद अगर मैं अपनी EV बेचूंगा तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी या नहीं. The good news is, as EVs become more common and the market matures, resale values are actually starting to stabilize. अभी शायद थोड़ा नया है, लोग थोड़ा सोचते हैं कि नई टेक्नोलॉजी है तो रीसेल वैल्यू का क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे EVs ज्यादा पॉपुलर हो रही है, लोग अच्छी कीमत पर उन्हें खरीद भी रहे हैं. Plus battery warranties and the fact that battery replacement cost भी कम होती जा रही है, ये सब रीसेल वैल्यू को improve करेंगे. So it's not going to be worthless at all. In fact, it should hold its value pretty decently, especially as more people get comfortable buying used EVs. What about the insurance, maintenance and other hidden costs? Give me the complete picture. Absolutely. Let's paint the full picture. तो देखिए, इंश्योरेंस की बात करें तो शुरू में इंश्योरेंस थोड़ी महंगी हो सकती है क्योंकि ईवी की शुरुआती कीमत ज्यादा होती है, लेकिन कई बार आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव्स या थोड़ा कम प्रीमियम मिल जाता है क्योंकि ईवीज को एनवायरमेंट फ्रेंडली माना जाता है. मेंटेनेंस के मामले में ईवीज एक्चुअली सस्ती होती है मेंटेन करने में क्योंकि इनमें कम मूविंग पार्ट्स होते हैं, कोई ऑयल चेंज नहीं, कम वेयर एंड टेयर होता है.
Hidden costs really aren't that high. In fact, आप शायद लंबे समय में बचत ही करेंगे. So the complete picture is कि हाँ शुरुआत में कुछ खर्चे थोड़े अलग हो सकते हैं, but over time आप maintenance और running cost में बचाते हैं. And insurance भी धीरे-धीरे normalize हो रहा है. So in the end, it actually balances out pretty well. If I have 15 to 20 lakhs and I'm buying it today, which EV should I buy in India and why? Yeah, absolutely. Let's get into that. देखिए अगर आपके पास 15 से 20 लाख का बजट है और आप आज के दिन एक ईवी खरीदने का सोच रहे हैं तो कुछ बढ़िया ऑप्शंस हैं. For example, the Tata Nexon EV is a really popular choice. It's well within that budget range, it's not a good range on a single charge, और टाटा का सर्विस नेटवर्क भी अच्छा है. Another option could be the Mahindra XUV 400, which also fits into that range and offers a solid package. Basically, इन दोनों ब्रांड्स पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि ये इंडियन कंडीशंस के हिसाब से डिजाइन हुआ है और सर्विस भी काफी एक्सेसिबल है. So I'd say something like a Nexon EV is a great all-rounder. Gives you that balance of range, affordability, and a brand that's really committed to the EV space in India right now. What about someone who has a budget of only 8 to 10 lakhs? Should they wait or they still go ahead with a petrol car? Yeah, that's a really practical question. देखिए अगर आपका बजट अभी 8 से 10 लाख के आसपास है तो अभी EVs उस प्राइस रेंज में बहुत ज्यादा नहीं मिलती है. In that case, it might actually make sense to either wait a bit if you really want an EV because prices are coming down and more affordable models are coming in. या फिर फिलहाल के लिए एक पेट्रोल कार लेना भी एक अच्छा ऑप्शन है. That way you get a car that fits your budget right now and maybe a few years down the line जब EVs और भी कम कीमत में आने लगे तब आप switch कर सकते हैं. So yeah, if the budget is tight, it's perfectly fine to go with a petrol car for now and then revisit EVs a bit later. Let's talk about the charging infrastructure. The government had promised charging stations everywhere. Realistically, how is the infrastructure in 2025? Yeah, definitely a hot topic. तो देखिए सरकार ने वाकई काफी बड़े वादे किए थे चार्जिंग स्टेशन को लेकर और 2025 तक हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हो गया. It's not perfect everywhere, but in major cities and along key highways, you're definitely seeing a lot more charging stations. छोटे शहरों में भी धीरे-धीरे नेटवर्क बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है हर जगह अभी भी ना मिले. So realistically, by 2025, it's much improved, but still a bit of a patchwork depending on exactly where you are. Overall, though, it's definitely a lot easier to find a charge than it was a few years ago, and it's only going to get better. Let's talk about the technology leap. Battery technology is improving fast. If I buy an EV today, will it become obsolete or outdated in 2 years? Yeah, that's a really common worry. और ये सोचना बिल्कुल जायज है क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है. But the good news is कि आजकल के जो EV models हैं, वो काफी future proof बनाए जा रहे हैं. Even if battery technology improves, the EV you buy today won't suddenly become obsolete in just a couple of years. It'll still work perfectly fine, and the infrastructure and software updates will keep it relevant. तो 2 साल में वो outdated नहीं होगा और आप आराम से उसे चला सकते हैं. In short, you're not going to be left behind just because the tech gets a bit better. It'll still serve you well for years to come. Should Indians buy EVs now or wait for 2 to 3 years? Give me a honest recommendation. Yeah, let's be totally honest about it. देखिए अगर आप अभी एक EV लेने का सोच रहे हैं और आपके लिए बजट और चार्जिंग वगैरह सब कुछ ठीक होता है तो अभी लेना एक अच्छा आइडिया हो सकता है. EVs are definitely practical now and you'll start saving on fuel costs and reducing your carbon footprint right away. But if you feel like you want more options or you need prices to come down even further, waiting a couple of years is also fine. The market's only going to get better. So it really depends on your personal readiness. अगर आप अभी comfortable हैं तो अभी लीजिए और अगर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो 2-3 साल में एक और भी अच्छे options मिल जाएंगे. Both choices are totally valid. That's it, ChatGPT. We wrap it up by saying thanks to you. You're very welcome. This was a lot of fun and I'm glad we could dive into all those EV details. Thanks for the great questions in the chat. Anytime you want to do this again, just let me know. So there you have it. ChatGPT just gave us a reality check on EVs in India. However, it could improve on its research. What is my take? Wait for it in the next episode. In the next episode, I'm grilling ChatGPT on the basics, market, environment, challenges, and the infrastructure and the future of EVs. You don't want to miss it. Till then, drive safe and stay curious.